Hello, guys. Yeah, so we are live again. Hello, everyone. So today we have got Krish back again with us. Last week we missed Krish. So we have Krish again. So we'll continue this week with all the new news and updates. And luckily, this week we have seen again Bitcoin breaking 37K. So let's pump it, guys. So I think people are joining in from different platforms. So आप लोग जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ बात करना है, तो आप चैट पे डाल सकते हैं. हम लोग वो क्वेश्चंस को बीच बीच में देखते रहेंगे. So let's start, guys. क्या बोलते हैं? Souvik and Krish. How do you Thank feel you. like after breaking 37K? मेरे पीछे जो देखिए हरियाली दिख रहा है Same here. देखिए Feeling जैसे like मैं आप that. लोगों को बोल रहा था कि अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो. एक सेकेंड. आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, दैट प्राइस हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली और कंपैरेटिवली हायर देन गोल्ड जब से ये इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर लगा है. तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई वॉर सिचुएशन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वांट टू गेट इनटू समथिंग जो कि स्टेबल हो, जो कि लेके वो जा सके कहीं इधर उधर. तो पहले वो होता था यूएस डॉलर या गोल्ड. तो यूक्रेन वॉर से ऐसा स्टार्ट हुआ कि पीपल हु आर लिविंग यूक्रेन और रशिया, दे कन्वर्टेड टू बिटकॉइन and or other cryptocurrencies, and they left the country with that. तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ केसेस आए थे कि Russians who landed in somewhere in EU, they just carried a hardware device with them. That's it. तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जो कि आगे आगे प्ले करता रहेगा कि जब भी कोई वॉर सिनारियो होता है तो प्राइस ऑफ गोल्ड अप्रिशिएटेड बिफोर. नाउ जब भी कोई वॉर सिनारियो होगा, price of Bitcoin will appreciate or price of other crypto will appreciate क्योंकि it's easy to carry. Nobody can take it from you even if you're crossing the border. So I think कि indirectly this war is playing an effect in pumping the price of Bitcoin now. और मेरा prediction है अगले let's say 2 से 4 साल में और भी अलग अलग रीजन्स में कुछ वॉर लाइक सिनारियोज या कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिनारियोज क्रिएट होंगे, एंड दैट विल आल्सो हेल्प बिटकॉइन टू गो अप और टू रीच हायर हाइज एंड मेक हायर लोज. सो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं टू सम पॉजिटिव न्यूज़ जो कि अराउंड द स्पेस कि किस तरीके से क्रिप्टो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है. And for people who are still sitting on the sidelines and thinking कि कब इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक कि 32K के पास 32K के पास आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग सपोर्ट. तो यहाँ से गिरेगा भी तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू क्रैश टू 16K और 15K और 10K और 8K जो भी डूम्स डे शेयर्स कह रहे थे. एंड द रीजन इज कि वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग ETFs, स्पॉट ETFs इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शन. और कोई भी जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे स्पॉट ETF सबसे पहले आता है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी देयर इन यूरोप. यूएस में आते ही एंड हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ये सब जगह में स्पॉट ETF आते ही इंस्टीट्यूशंस विल स्टार्ट पोरिंग इन मनी विच विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन अगेन. तो काफ़ी सारा फैक्टर्स है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. तो फर्स्ट न्यूज़ जो है, जो हम लोग बोल रहे थे कि लाइक हांगकॉन्ग इज planning to create a spot crypto ETF hub. तो सिंगापुर यही प्लान कर रहा है. तो if Hong Kong creates it, so it will get more clients to come and launch their ETF from Hong Kong. Means more business for Hong Kong. Same thing, ARK Invest is trying to launch a digital asset ETF with 21 shares, which is also a spot ETF. So all these things shows कि price of Bitcoin is going to move up rather than down from here. तो most of the time जब हम लोग, मैं जैसे बोल रहा था कि like if you are an investor you can start investing little by little. I think now this is a very bullish sign कि
start loosening your purse and start getting into crypto, because you might not see these prices again for the, let's say, 1, 2, 3 years at least. That's my prediction. So any comments, Sam, Shovik, on this? मैं क्योंकि मैं एक्चुअली I think मैं लास्ट टाइम Shovik is a trader and Sam is an investor, or Sam is a long time holder or hodler. So what do you think कि यहाँ से क्या bull case scenario है and what is the bear case scenario? I have not given the bear case scenario. I have just given you the bull case scenario. एक्चुअली कुछ वीडियोस में मैंने बताया है, स्पेशली एक तो वीडियोस में तो मैंने डेफिनेटली बताया है कि हम सभी को जाना एक ना एक दिन ऊपर ही है। तो वो मार्केट हो चाहे इंसान हो या फिर कोई भी हो, तो मतलब सिनेरियो वही है कि इन्वेस्टमेंट में अगर आप लोग लगा रहे हो पैसा, तो फिर आप लोग छोटा टाइम फ्रेम के लिए मत सोचो, बड़ा सोचो। परसेंटेज में तो क्रिप्टो मार्केट में तो स्पेशली मत ही सोचो, यहाँ पे मल्टीफोल्ड के बारे में सोचो, कैसे ट्वाइस, 3x 4x इस टाइप का होगा। तो यहाँ से जो सिनेरियो दिख रहा है तो 32,000 के आसपास तो काफी अच्छा सपोर्ट है। मैंने डिस्कस भी किया है हम लोगों ने इसके बारे में, कैसे कैसे प्लान आउट करना है, और आगे जाके हम लोग और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये जो 35 36 का मार्क जो है इसको ब्रेक कर रहा है बीटीसी, तो ये क्या आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मैम Sam, आपका क्या कहना है? yeah, that was my question as well. So I think other than the world-like situation जो आपने बताया, Krish, so I was not focusing much on the world-like problems or situation जिसके बाद crypto उठा है, but this kind of news जो कि you know spot ETFs हो गए या institutions के लिए जो दरवाजे खुल रहे हैं अभी, so I am more focused on that because once institutions starts coming in into crypto, then I think ये सब levels बहुत दूर हो जाएगा and we'll see bitcoins in like 100K and उसके ऊपर, because last bull run we were just predicting like okay 60 65, so will it get to 100, but again it didn't happen because उतना ज़्यादा inflow नहीं था, it was mostly retailers and some institutions pulling it up, but अभी तो जैसे ही स्पॉट ETFs आएगा, बिकॉज जैसे न्यूज आया था कॉइन गेको का, आपने जो देखा होगा कॉइन गेको कॉइन टेलीग्राफ, जिसका गलती न्यूज आ गया था, उसके बाद फिर प्राइस पंप होना स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा, तो यू कैन सी लाइक कि कितना ज्यादा एंटिसिपेशन है कि स्पॉट ETF जैसे ही एक ऐसा न्यूज आ गया कि इसको मिल चुका है, देन उसके बाद इंस्टीट्यूशन शायद कूद पड़ेंगे एंड उसके बाद प्राइसेस विल नेवर स्टॉप, सो जस्ट लाइक एक्चुअली यू सेड, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज और भी है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगा। इंस्टीट्यूशंस जब भी आता है ना कोई भी मार्केट में, तो मार्केट को हमेशा एक मैच्योरिटी के लेवल की तरफ लेके जाता है। तो वहाँ पे जो वोलेटिलिटी है ना, वो भी आप लोग अभी जैसे देख रहे हो ना, इतना ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वोलेटिलिटी इतना ना रहे, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे मैच्योर करता जाएगा उतना वोलेटिलिटी कम होता जाएगा। और उतना क्या है कि मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो है ना वो काफी अच्छे से फॉलो करेगा। तो ये सब चीज आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो। जैसे अभी क्या होता है, अभी आप लोग खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत सारे अभी भी डर रहे होंगे कि अभी तो 37,000 दिखा रहा है कि इन्वेस्ट करो, और अचानक से पता चला कल सुबह ही वो 28,000 30,000 चला गया। तो मतलब ये जो डर है ना, ये धीरे धीरे आपके मन से चला जाएगा जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा आने वाले टाइम में। करेक्ट। तो ये तो बुल केसेस हुआ, तो अब मैं बेयर केसेस के ऊपर आता हूँ कि लाइक व्हाई आई स्टिल हैव सम डाउट्स। तो बेयर केसेस ये है कि देयर इज ओनली वन रीजन प्रोबेबली व्हिच आई थिंक बीटीसी विल गेट इनटू ट्रबल इन सम प्लेसेस, वो है लॉज इन पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शंस। तो कुछ कुछ कंट्रीज में लॉज आर फेवरेबल, कुछ कुछ कंट्रीज में अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बने हैं, कुछ कुछ कंट्रीज में दे आर बैंड। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ क्रिप्टो राइट नाउ। तो जिस तरीके से स्ट्रॉन्गर लॉज बनते रहेंगे उस वजह से बिटकॉइन विल बिकम हार्डर टू एक्सेस इजीली। जैसे अगर आप इंडिया में देखते हो तो बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस ऐसे हैं कि यू कैन नॉट विड्रॉ क्रिप्टो आउट मोर देन लेट्स से 500 USDT, जो कि 40,000 रुपए के ऊपर है। यू कैन नॉट बाय बिटकॉइन और इथेरियम और सम अदर क्रिप्टो
with an amount of more than 5 lakhs per day, roughly. So these are all restrictions from centralized exchanges in a particular jurisdiction. कहीं और पे that number will be higher, कहीं और पे it's banned. So all these cases will make it very difficult for you to access crypto. तो ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐप स्टोर्स, गूगल स्टोर्स, they are moving apps which are in crypto if they do not have license to operate there. तो जिस तरीके से यूके में समझ लीजिए अगर एफएससी का लाइसेंस नहीं है, सो यू कैन नॉट प्रोमोट दैट यू आर अ क्रिप्टो कंपनी, एंड सूनर और लेटर वहां से जो भी ऐप स्टोर में वहां पे जो भी क्रिप्टो कंपनीज है और जो भी वहां पे दिख रहा है, सो दे विल जस्ट बैन इट. तो इस तरीके से लोगों को वहां के लाइसेंस रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर P2P करना पड़ेगा. सो बोथ ऑफ देम हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, बट आई थिंक जितना जितना रेगुलेशंस बढ़ेंगे, it will become harder and harder for people to access crypto directly. You can access crypto indirectly via buying these ETFs or जैसे इंडिया में coin switch कुबेर के through you can buy the underlying asset but you cannot withdraw it out. So these things will be there but you cannot withdraw it out, right? So you will always be locked up in a system. तो जैसे पेपैल करता है, तो बिफोर पेपैल वाज जस्ट अलाउइंग टू बाय, यू कैन नॉट विथड्रॉ दैट क्रिप्टो. सो आई थिंक दिस इज अ बियर केस सिनेरियो फॉर क्रिप्टो, जिस तरीके से मूव कर रहा है, एंड सम ऑफ द न्यूज लेटर ऑन दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज आल्सो ऑन दैट फ्रंट. तो फॉर एग्जांपल जैसे कजाकिस्तान अथॉरिटीज हैव ब्लॉक्ड एक्सेस टू कॉइनबेस. क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान में कॉइनबेस के पास कोई लाइसेंस नहीं है. सेम थिंग जेमिनी टू रेस्ट्रिक्ट क्रिप्टो ट्रांसफर्स इन द यूके, क्योंकि Gemini doesn't want to go and give their access to, let's say, retail investors. तो retail investors के पास options कम हो रहे हैं. Same thing again, not this one, this one. तो इसको avoid करने के लिए Binance क्या कर रहा है? Binance is saying we have a Web3 wallet, so you can keep your crypto safe in this wallet, and even if you travel from one jurisdiction to another jurisdiction, we are not going to block you. तो रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि आई हैड अ पेयोनियर अकाउंट लॉक्ड विथ मी इन ताइवान विद अ ताइवानीज USD बैंक अकाउंट. तो पेयोनियर में मेरे कुछ पैसे थे, आई फॉरगॉट. सो वंस आई केम टू इंडिया दे वांटेड मी टू री KYC. तो मैंने री KYC किया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यू हैव टू विथड्रॉ द मनी टू ताइवान, यू कैन नॉट विथड्रॉ टू इंडियन बैंक अकाउंट, नॉर कैन वी अलाउ यू टू सेंड इट टू समबडी एल्स. एंड नाउ इफ आई विथड्रॉ टू ताइवान, then I have to actually go to Taiwan to actually withdraw the money out. I don't have an online application to withdraw that money out. That was my mistake. But anyways, you get the point. Ki this is very difficult for fiat, and they are going to do the same thing for crypto, ताकि आप एक कंट्री से अलग दूसरे कंट्री में पैसे बाहर लेके नहीं जा सकते. So this is I think the peer case for crypto, कि जिस तरीके से laws आ रहे हैं, जिस तरीके से restrictions create किया जा रहा है, this will make it very hard for people to directly buy crypto and withdraw it from one wallet to another wallet. You can buy crypto in an exchange and you hope that the exchange will not go bankrupt, or आपके पैसे लेके exchange trade नहीं करेंगे, or the exchange will not get hacked, right? Or there is no insider who is moving your money out and you are just seeing a balance. There are a lot of odds. Yeah, there are a lot of odds here. तो यहाँ पे या तो गवर्नमेंट को रेगुलेशंस के साथ साथ इन चीज़ों को भी रेगुलेट करना चाहिए कि क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब सिर्फ एक्सचेंज ही कर सकता है, जैसे NSE BSE. यू कैन नॉट होल्ड मनी फॉर क्लाइंट्स, उसके लिए NSDL CSDL है. यू कैन नॉट होल्ड INR फॉर सम क्लाइंट्स. तो अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है तो यू कैन मूव द क्रिप्टो फ्रॉम दैट कंपनी टू अनदर कंपनी. फॉर एग्जाम्पल FTX जापान. FTX जापान के सब यूजर्स के क्रिप्टो सेग्रीगेटेड थे. इवन इफ FTX वेंट डाउन, नोबडी सफर्ड इन जापान. तो उस तरीके के लॉज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज में, इवन इन इंडिया, जब आप क्रिप्टो खरीदते हो तो आपके क्रिप्टो लेके क्रिप्टो एक्सचेंजेस ट्रेड करते हैं, एंड इफ दे लूज मनी एंड इफ दे कैन नॉट पे यू बैक, दे गो बैंकरप्ट. सो दिस इज अ प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज टू रियली थिंक अबाउट. दैट्स माय बियर केस. अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा बियर केसेस है, सो वी कैन सैम, प्लीज गो अहेड. फिलहाल तो कुछ नहीं. फिलहाल तो मैं हरियाली के साथ ही जाना पसंद करूंगा.
I think like there is two way to see it. Like one is the exchange side जो आपने बताया कि अगर exchange hack हो जाता है या जो भी odds थे, so that is like facilitating initial new users to come into crypto and join it, because अगर उनको हम लोग DeFi wallets में बोलते हैं, so there is a very strong chance उनको आधे समझ में नहीं आएगा, and that is very hard to understand and transact. And also for the web3 wallets that are till now, अभी बहुत सारे web3 wallets ऐसे आए हैं where you can recover the seed phrases, but maximum of the wallets जो अभी तक है, metamask हो गया, trust wallet हो गया, so you can't recover the key phrases. तो बहुत बार ऐसे होता है users भूल जाते हैं because we are habituated with going to a bank and अगर पासवर्ड भूल गए वापस से जाके get a new password generated. So if all the things are moving to this kind of web3 wallets, so it's also hard for new users if there is no exchange kind of a thing to jump into crypto. मतलब जो mass adoption का हम लोग बात करते हैं वहाँ पे problems आ सकते हैं. So basically just like you were saying कि अगर government इसको intervene करते हैं, so exchanges should be very transparent and we can trust them just like we trust banks with our money. तो ये सिर्फ उसी टाइम पे हो सकता है जब आप एक्सचेंज बिजनेस को सेग्रीगेट कर दो, राइट? यू हैव अ लाइसेंस कस्टोडियन जो कि आपका कस्टडी करेगा एंड यू डू इंश्योरेंस ऑन टॉप ऑफ दैट. यू हैव एन एक्सचेंज जहाँ पे यू कैन ऐड योर वॉलेट और यू कैन कनेक्ट योर वॉलेट एंड यू कैन ट्रेड, एंड एक्सचेंज विल मेक मनी आउट ऑफ द ट्रेडिंग फीस और द स्प्रेड. दे विल नॉट मेक मनी कि आपका पैसा लेके वो खुद ट्रेड कर रहे हो. And finally you have trust accounts जहाँ पे exchanges या custodian आपके INR होल्ड कर रहे हैं. So this will be the exact same structure जैसे stock exchange में stocks को ट्रेड किया जाता है, with the additional advantage कि आप stocks को withdraw नहीं कर सकते हो कहीं पे. Like you cannot withdraw your stocks from Share Khan to Zerodha or somewhere else, but यहाँ पे वो कर सकते हो. So this is like an added benefit. But you can transfer the stock from one demat account to another demat account. That's what you can do. You can transfer the demat account, but you cannot transfer the stock, right? जैसे समझ लो आपके पास जीरोधा है और आपके पास शेयर खान है. अगर जीरोधा में आपको ₹1 ज्यादा दिखा रहा है, शेयर खान में कम दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल, तो आप उसको आर्बिट्राज नहीं कर सकते हो. बट क्रिप्टो में आप उसको आर्बिट्राज कर सकते हो. यहाँ पे तो एक्चुअली उस टाइप का सिनेरियो ही नहीं है ना. यहाँ पे तो सेंट्रली प्राइस को जो है सेट किया जाता है, क्योंकि एक्सचेंज इज सेंट्रलाइज्ड. बट क्रिप्टो में क्या, एक्सचेंज इज नॉट सेंट्रलाइज्ड. अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडोनेशियन मॉडल को फॉलो करता है कि दे क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज and every other company like CoinDCX, WazirX, etc. becomes a broker or sub broker, right? Then Indian government is setting the prices, and all these other companies are getting the feed and they are serving their customers. So their customers' funds are with a centralized custodian, and INR is with a bank which is a centralized bank. तो आपका losses का chances कम है. हाँ, now if you want to withdraw your wallet and give it to a Nigerian prince who has promised you to pay $1 million overnight, that's a different story, right? But this is how the crypto industry is going to mature. जिस तरीके से stocks अभी exchanges से move के OTC houses में चले गए हैं. So right now if you are using, let's say, Robinhood, so Robinhood is not connected with a Nasdaq or any other centralized exchange. It is connected with Citadel, which is a liquidity provider. So everything is happening off exchange. Yeah, बोलिए. यहाँ पे एक्चुअली ये भी है, स्टॉक मार्केट में जो है ना, अभी भी सेंट्रलाइज्ड प्राइस कई जगह पे सेट नहीं होता है. जैसे ग्रे मार्केट होता है, डब्बा बाजार होता है. यहाँ पे जो है, यहाँ पे काम तो चलते रहता है, लेकिन हाँ वो इलीगली होता है, राइट? तो फिर लीगली अगर कोई किसी चीज को एक सही तरीके से करना होगा तो फिर वो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आके काफी हद तक वो सॉल्व हो सकता है, वो वाला प्रॉब्लम. एक दिन में ये नहीं होगा या एक साल में ये नहीं होगा, बट द प्रोसेस हैज टू बिगिन समवेयर. एंड lot of the time the centralized exchanges or the centralized platforms in those countries इस तरीके के लॉज नहीं आना देना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के लॉज आ जाते हैं then they will not be able to use customer funds to play and make money. I have told multiple times कि Binance जैसे वर्ल्ड के बिगेस्ट एक्सचेंज में वहां पे they have their own prop trading team जो कि कस्टमर्स के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं, राइट? So they're actually doing it. India में I don't have any idea अगर ऐसे करते हैं कि नहीं, but I have an idea कि some of the Indian exchanges
used to definitely use customer funds and trade on Binance or some other outside exchanges. So if they lose money, they lose money. Just as Celsius, it used customer funds to put money on Bejardao and Luna and whatnot, and they lost money and they got bankrupt. So everything is there. All you need is to implement the same regulations, same licenses, same everything in the crypto space. If you treat crypto like stocks, but there are some added things that has to be done. But if you treat it like that as a first step, you just regulate the custodians, you give certain number of license to custodians, you give certain number of license to brokers, you give certain number of banks to use as trust account ताकि user का fund loss ना हो. And you do KYC and you do AML and you do everything. So everything is segregated, everything is okay, like separated. So this is where I think Binance का Web3 wallet आ रहा है, OKX का Web3 wallet आ रहा है. So all these people are trying to do the same thing. कि you trade on my exchange, you have this wallet where you can move the money out, so that अगर OKX hack होता है या Binance hack होता है, then your money is still with you in your Web3 wallet, which we don't have any control. So money movement is still centralized. So it has to be a centralized way for depositing INR and getting crypto. But when you trade, that can be on a centralized platform or a decentralized platform, right? So centralized non-custodial way or centralized non-custodial platform is the way to go ahead. And a government अगर आके यहाँ पे centralized को properly regulate कर देता है, I think it's a very good thing. That's just my thought. And anyways, with thoughts, let's just move to some actions. तो काफी एक्शन देखने को मिला है रिसेंटली. रॉजर वार इज सुइंग मैट्रिक्स स्पोर्ट. तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रॉजर वार इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल और पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉइनफ्लेक्स गोइंग बैंकरप्ट. तो क्या हुआ कि रॉजर वार को कॉइनफ्लेक्स ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था कि यू कैन लॉन्ग द मार्केट विदाउट पुटिंग, यू कैन लॉन्ग द मार्केट एंड यू हैव अ सर्टेन कोलैटरल. तो जब वो कोलैटरल के पास चला गया था, कॉइनफ्लेक्स आस्क्ड देम कि हे, योर मनी इज अराउंड कोलैटरल, send us more crypto so that we can maintain your margin. Roger Var kept on saying yes we will do it, yes we will do it, but ऐसा नहीं किया, and then it went below it, and Coinflex ने उसको liquidate नहीं किया. They did it for one client and इसीलिए Coinflex bankrupt हो गया. Because when let's say you are in loss of $100 and you have $50 on a platform, you don't want to put $50 out of your pocket, right? You just say, okay, fine, let me just liquidate, I will buy more crypto with this $50. So this is what Roger Var did. And इसीलिए Jihan Wu, who is also the owner of Matrix Port, उन्होंने Roger Var के $8 million को block कर दिया है Matrix Port में, because they were able to identify he has money there and he blocked it. So this is also a problem of centralized platform, right? He did it out This of is his actually own good. Nobody told him. No agency might have told him कि Roger Var को जाके block करो. Matrix Port ने इसलिए किया because probably Matrix Port has invested in Coinflex, or probably Coinflex's founders are close to Matrix Port, or whatever is the reason. But this is the problem of centralized crypto. अगर exchange चाहे तो आपका पैसा block कर सकता है of no reason. क्योंकि fine, Roger Var might have done a problem in Coinflex, but Coinflex has nothing to do with Matrix Port, right? So this is a problem which will not exist if there is proper regulation. Any questions, Sam, Sovik? I think Shovik has to No, I was say thinking something. about perhaps they were trying to maintain the relationship with Roger Ver. That's why they didn't take any action No, at the they're trying to maintain the the relationship crisis. with Coinflex. Roger Var के पैसे रोक दिए गए हैं ना, हाँ क्योंकि हाँ, Roger Var मैं वही बोल Coinflex रहा को हूँ. चलाया जब था. जब जब उन्होंने लेवरेज लेके वहां पे पोजीशंस को मतलब लिक्विडेशन का नौबत आ गया था, तब उन्होंने लिक्विडेट नहीं किया एक्सचेंज ने. तो एक तो एक्सचेंज की तरफ से ये गलती हुआ है, ठीक है, Correct. और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, तो एक्सचेंज जो है वो गया काम से. फिर आके कोई थर्ड पार्टी अगर इसके ऊपर स्टेप्स लेता है तो ये काफी सस्पिशियस हो सकता है कि इन्वेस्टर मतलब ये एक्सचेंज में इनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वगैरह होने का तो काफी Correct. चांस है. नहीं तो फिर ऐसे ही कोई थर्ड पार्टी आके क्यों किसी का फंड ब्लॉक करेगा. Correct. So enough of these speculations. So let's go back to the real speculation in the crypto market now. So market is pumping. November is here. I still predict कि we will get a chance to buy Bitcoin below 30K.
before the bull run begins. But I hope I am wrong. I definitely hope I'm wrong. But let's see what Souvik says, and सौविक जी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में. हर वीक की तरह हम लोग बीटीसी यूएसडीटी का वीकली जो चार्ट एनालिसिस है वो हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा. तो पहले जो टाइम फ्रेम है इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ ताकि डेली क्या एक्टिविटी हो रहा है ये थोड़ा सा उस पर हम लोग नजर डाल पाए. ठीक है, ये जो चैनल है इस चैनल में तो ये घुस गया था जब तब तो बहुत अच्छे से पंप हुआ था. उसके बाद ये जो पैटर्न, एक सेकंड में एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोग को. ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है. ठीक है, ये जो है ये पोल है और इसको आप लोग फ्लैग की तरह ऐसे मान सकते हो. ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है. ठीक है, तो ये एक अच्छा काफी मतलब आप बोल सकते हो कि कन्विंसिंग एक पॉइंट है जिसको आप लोग नोट करके रखो कि जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ता जाएगा उस तरह से जो है ना प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा. और पास्ट में भी इस टाइप का सिचुएशन जब भी आया है मार्केट में, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है तो फिर वो ब्रेकआउट सस्टेन किया है और काफी लंबे टाइम तक सस्टेन किया है. ठीक है, तो ये डेली चार्ट हो गया. अभी हम लोग थोड़ा सा सॉरी, बिटकॉइन झंडे गाड़ रहे हैं, राइट? फ्लैग एंड फ्लोट पैटर्न, राइट? तो बिटकॉइन झंडे गाड़ रहे हैं. हाँ, झंडे काट रहा है. तो जैसे कि एक बार हम लोग ने लास्ट टाइम भी बताया था कि 32,000 का जो एरिया है ना, पिछला वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो कि 32,000 का एरिया जो है, तो हम लोग ने बताया 30 और 32,000 ये जो है ना ये काफी अच्छा बेस बन के आ रहा है. क्योंकि मैंने एक बार ये डिस्कस किया था कि ये जो जोन है ना ये एकुमुलेशन जोन था. देखिए इसमें पैटर्न के अप्स एंड डाउन ये रेंज के बीच में फंसा रहा. फिर से क्या किया, ये रेंज तोड़ के बाहर आ गया. फिर उसके बाद ऊपर एक रेंज बना के वो रेंज को तोड़ के अभी ये बाहर जा चुका है. ठीक है, तो इसमें मतलब ये इस रेंज में घुसने का जो प्रोबेबिलिटी है ना ये काफी कम है क्योंकि ये काफी लंबा टाइम तक कंसोलिडेशन चला है और एक्युमुलेशन जो भी आप बोल सकते हो. और आप लोग अगर मेजर वॉल्यूम देखोगे तो इस जोन में आया है, मतलब एक्युमुलेशन जो हुआ है ना यहाँ पे हुआ है काफी अच्छे से. अभी तो छोटा छोटा वॉल्यूम आपको दिख रहा है इधर. ठीक है, जो काम करना था इंस्टीट्यूशन को या फिर स्मार्ट मनी को, यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. और अभी धीरे धीरे जो है मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे रिटेल पार्टिसिपेशन भी इसमें आएगा. फिर जो है फोमो क्रिएट होगा, फिर जो है मतलब यूफोरिया क्रिएट होगा मार्केट में कि मार्केट एकदम 500 के 1000 के चला जाएगा. तो इस टाइप का सिनेरियो भी आएगा एक ना एक टाइम में. तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का रिस्क एपिटाइट क्या है, उस हिसाब से आप लोगों को डिसीजन भी लेना है. तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो हम लोग इसको आवरली कर देते हैं. स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली जो है इस टाइप का जो व्यू है, इस टाइप का चार्ट हम लोग को सेट करना होता है. तो यहाँ पे देखिए 33,000 इस जोन में जो है यहाँ पे एक रेंज बनाया था और इस रेंज को तोड़ा है यहाँ पे 36,000 में. ठीक है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेड कर रहे हो वो लोग अगर पोजीशंस लेना चाहते हैं तो फिर ये जो ये लेवल, ये में एक लेवल और दूसरा ये में सेकंड लेवल, ये दो ईएमए को एक बार टेस्टिंग के लिए ये नीचे आ सकता है. ठीक है, तो आप लोग 35,900 36,000 इसको मार्क करके रखो. ये इस जोन में जब आता है तब आप लोग पोजीशंस लो. किस साइड में आप लोगों को देखना है कि ये जो लेवल है इसको रिटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है ऊपर की तरफ या फिर ये नीचे जा रहा है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए. तो अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना होगा. और इस लेवल को अगर तोड़ा तो फिर नीचे और एक सपोर्ट लेवल आपको बन के आएगा 34,000 33,800 34,000 इसके आसपास. उसको अगर तोड़ता है तो और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकता है. लेकिन वही जो है कि दो चीज है, एक होता है प्रॉफिट बुकिंग और दूसरा होता है फ्रेश शॉर्ट. जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, लेकिन जब फ्रेश शॉर्ट बनना स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यूएशन जो है काफी नीचे जा सकता है. तो आप लोगों को वो सब चीज ध्यान में रख के ट्रेडिंग डिसीजंस लेना इस होगा. माहौल में फ्रेश शॉट बनाने के लिए आपको जिगरा चाहिए. हाँ डेफिनेटली. के साथ पैसा भी चाहिए. क्योंकि जब क्योंकि बिटकॉइन क्योंकि क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में जब बिटकॉइन अगर आपके पास 1%, 2%, 3% ऑफ द होल स्टॉक का कैपिटल है तो आप उस स्टॉक को हिला सकते हो, राइट? लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अगर आपके पास बिटकॉइन का 1% या 2% या 3% है, आप बिटकॉइन को नहीं हिला सकते. यू कैन मूव सम स्मॉलर टोकन्स और कॉइन्स,
जिसका मार्केट कैप समझ You लीजिए have to 100 go मिलियन। against you have to नहीं go मतलब against all the institutions, all the players in the market who स्पेशली are already बिटकॉइन taking positions in the long side. Yeah, Bitcoin में especially. बिटकॉइन में स्पेशली तो आप छोटे कॉइन्स को हिला सकते हो। यू कैन गो टू सम सिटी एक्सचेंज जहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सचेंज में एक ही कॉइन एक ही पेयर के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है, एंड यू वांट टू डू अ शॉर्ट एंड यू एक्चुअली डंप अ लॉट ऑफ कॉइन एंड यू डू अ शॉर्ट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड यू मेक मनी आउट ऑफ देयर। वो हो सकता है, इस मार्केट में भी वो हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन में अगर किसी को शॉर्ट करना है तो उसको जिगड़ा चाहिए अभी। इस तो पोजीशन इसीलिए पे तो शॉर्ट कब फ्रेश शॉट एक्चुअली पता है क्रिस कब बनता है? जब मार्केट में फॉल आ रहा हो ना और कोई मेजर एक सपोर्ट को ब्रेक कर रहा हो और फिर ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा हो, मतलब बायर्स वहां पे मिल नहीं रहा है, चारों तरफ फियर है, तब फ्रेश शॉट बनता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत भी शॉर्ट्स बचा कुचा होगा ना अप टू 40,000 वो सब अभी लिक्विडेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बिटकॉइन एक दिन में भागा है 5.33% और सोलाना देखो 12%। मतलब कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत ज्यादा रैली दिया है। बिटकॉइन भागा है 5% मतलब बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बहुत बड़ा जनरली बात है। बिटकॉइन 1-2% बढ़ता है या 3% बढ़ता है डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस में 5, 7, 10, 15% बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन एक दिन में 5% बढ़ रहा है, विच इज अ ह्यूज थिंग। तो और चलिए यहाँ पे इथेरियम के बारे में बोल लीजिए, इथेरियम के बारे में हम लोग को डिस्कस कर ले। या मुझे लगता है कि एक्चुअली मुझे एक चीज कहना है कि बिटकॉइन के साथ इथेरियम का तो कोरिलेशन रहता है और ऑल्ट कॉइन्स का भी कुछ कुछ रहता है। तो मेरे हिसाब से जब बुल मार्केट का एंट्री हो रहा हो या फिर बीटीसी 5% 10% इस तरह से अपसाइड में मूव कर रहा हो, तो जो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना चाहते हो, टोटल डिप्लॉयड कैपिटल का जो क्रिप्टो मार्केट में है उसका मान लो कि 10-15% या 20% को में के ऊपर थोड़ा सा बेट लगाना चाहते हो, वो ऑल्ट कॉइन्स में देख सकते हैं। और जो अच्छा ऑल्ट कॉइन्स है, टॉप 20 ऑल्ट कॉइन्स, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ नॉलेज शेयरिंग, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। या तो ऑल्ट कॉइन्स में जो है वो उछाल जो है वो काफी ज्यादा आएगा। यहाँ पे जैसे सोलाना में आप 11-12% का देख सकते हो, और भी काफी कुछ कॉइन्स में जैसे सोलाना में एक बियर इधर केस एवेक्स है, में 5%। सोलाना में एक बियर केस है, तो आई विल नॉट सजेस्ट सोलाना, क्योंकि FTX का काफी होल्डिंग है सोलाना में, एंड FTX इज गोइंग थ्रू अ लिक्विडेशन प्रोसेस। तो अगर सोलाना डंप करना स्टार्ट हुआ इस मार्केट में, तो स्पेशली सोलाना विल सफर अ लॉट। तो अगर आपको ऑल्ट कॉइन में खेलना है तो आई थिंक यू कैन गो फॉर सम न्यू ऑल्ट कॉइन, जैसे आर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, सुई हो गया, एप्टोज हो गया, मैंटल हो गया, ऑल दीज ऑल्ट कॉइन्स। डोंट गो फॉर एन ऑल्ट कॉइन जहाँ पे आपको पता है कि ऑप्टिमिज्म हाँ ऑप्टिमिज्म सही है, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम। ऑप्टिमिज्म एक्चुअली ऑप्टिमिज्म का प्लस पॉइंट ये है कि उसका जो लिस्टिंग प्राइस है ना उसके आसपास ही प्राइस अभी घूम रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कोई एक पर्टिकुलर कॉइन के लिए। मतलब आप हार्डली क्रिप्टो मार्केट में देखोगे इस टाइप का कॉइन मिलेगा कुछ आप लोगों को। एंड दिस इज अ वेरी बुलिश साइन, क्योंकि अगर आप सुई को देखते हो तो सुई में क्या हुआ कि द डे सुई पुल्ड आउट आई थिंक 100 मिलियन 120 मिलियन सुई और समथिंग लाइक दैट फ्रॉम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, तो सुई का फॉल हुआ लाइक $1 से एकदम 35-40 सेंट्स के आसपास, एंड नाउ आई थिंक इट्स लाइक पॉइंट समथिंग, 0.6, 0.5 समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऑप्टिमिज्म काफी स्टेडी है, एंड इट्स आल्सो मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ मनी। आई एम नॉट सेइंग इट्स पॉजिटिव इन रेवेन्यू शेयर, इन रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, पर मतलब अगर आपको डालना है पैसा तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू गो विथ न्यू कॉइन्स, बिकॉज दैट इज वेयर न्यू मनी इज बीइंग रोल्ड इन, एंड दैट इज अ चांस वेयर if you want to put a $1, do you want to put it on XRP or do you want to put it on SUI? Because XRP already has a limit कि इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेक करेगा, but SUI has no तो upper काफी सारा स्टोरी भी है। तो हर स्टोरी हर जगह यहाँ नहीं पे बोलते मैटिक का यहाँ पे क्रिस एक्चुअली मैटिक का प्राइस देख के मैं हैरान हूँ। ये 7% बढ़ चुका। लास्ट वीक में मैंने देखा था एक बार मैटिक का प्राइस, लास्ट वीक होगा शायद 2 हफ्ता पहले 60.65 के आसपास घूम रहा था। अभी सैम तो बहुत खुश हो रहा होंगे इस प्राइस को देख के। हम लोगों ने उस टाइम में बोला भी था कि मैटिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लाइक आर्टिफिशियली डंप किया जा रहा है, एंड probably because उसके आसपास में है, it's like from an Indian founder, so some of the Indian founders leaving the project, and that's a bad sign, this that। तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि IPO के बाद a lot of the time CEO and co-founder they move away from that position,
and they become directors, and they hire new CEOs to run the project, right? क्योंकि these people have no idea how to run a listed company. तो उस तरीके से Matic has grown a lot big, and for sure it's still a startup, it's still losing money. So I think it's high time they have to bring somebody who can helm the project in the right direction. So it's not always a bad sign that founders are leaving. It's just how you see and how you perceive things. There were a lot of bad reviews, lot of bad press, and I still said कि Matic is a solid project. Yes, there are hiccups, there are problems, but moving forward, things will go better for them. So, anyways, let's go back एज to एन इंडियन, मैं एक Ethereum. वीडियो में बोला भी था, एज एन इंडियन आई डेफिनेटली सपोर्ट मैटिक हाँ ठीक है पॉलीगॉन. ठीक है. Let's go back to Ethereum, which is a decentralized, money. And आपको क्या लगता है कि Ethereum जो अभी ज्यादा रन नहीं, ज्यादा gains नहीं दिया है compared to Bitcoin, there is still upside for Ethereum, or do you think the upside is already priced in? आपको क्या लगता है? Let's not go to the charts, just casually. No, definitely not. Ethereum is still yet to come and yet to join the rally. मैं एक बार Ethereum का चार्ट खोल What do लेता you हूँ यहाँ think? पे, just a moment. तो इथेरियम का जो generally है क्या ना, होता अभी मतलब इथेरियम का रैली अभी चल रहा है, ठीक है. तो ये जो पैटर्न है, एक्चुअली इथेरियम का एक्चुअल मूव कहाँ पे स्टार्ट होगा, 2300 2400 के पार, ठीक है. वहां से एक्चुअल मूव इथेरियम का स्टार्ट होने वाला है. ये जो है, ये तो छोटा मोटा रन जैसे चलता ही रहेगा, 2-3%, 5%, लेकिन एक्चुअल जो मल्टीफोल्ड वाला रिटर्न है ना, वो उसके पार बनेगा. तो आप लोग वेट करो, जो मतलब थोड़ा सा और कन्विंसिंग वे में जाना चाहते हो या फिर थोड़ा सा और सेफली प्ले करना चाहते हो, नहीं तो फिर इस पोजीशंस में भी इथेरियम को एक्यूमुलेशन किया जा सकता है. और डाउन साइड में जो है वो 1700, ये लेवल आप लोग मार्क करके रखो. यहाँ पे सपोर्ट है 1700 to 1750. करेक्ट. तो चलिए, इसके साथ हम लोग चलते हैं आज के बाकी कुछ न्यूज़ के ऊपर. तो जैसे मैं कह रहा था कि सेंट्रलाइज्ड कंपनीज का काफ़ी होल्ड रहेगा टू मेक और ब्रेक क्रिप्टो. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैक एक्सपीटी ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिमूव्ड अ फेक लेजर ऐप. तो माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी जिसका लिस्टिंग प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, they actually had a fake ledger application, and people who did not know the difference, they would have probably put some money. अगर एक भी डॉलर उस ऐप में जा रहा है, it's because of the fault of Microsoft, because people trust Microsoft has done the due diligence, but they actually didn't do anything, and they allowed it to pass. So this kind of things will definitely happen, and इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू से ओके फाइन, इंडिया में ये 10 एक्सचेंजेस है या ये 10 ब्रोकर हाउसेस है, ब्रोकिंग हाउसेस है या प्राइम ब्रोकर्स है, जिसके ऐप आप इंडियन यूजर्स को दिखा सकते हो, एंड दीज आर ऑल लेजिट एप्स, राइट. तो इस तरीके से अगर रेगुलेट किया जाता है स्पेस को, तो आई थिंक स्कैम्स का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा. बट वंस अगेन, if you want to withdraw the money and send to a Nigerian prince, or a European damsel in distress, that's a different story. I think there has been a loss in the Ledger Live also, like around $700K. Some people have downloaded it and then they have lost the money for the fake app also. Yeah. So, मतलब, who is going to pay them back? Nobody. You cannot sue Microsoft, right? Right. You don't have the money. You cannot sue Microsoft. So let's come to another problem in the crypto space, is hot wallet suffering. So crypto exchange CoinSpot reportedly lost $2 million. Certic said that it's a private key compromise and $2.4 million gone. So same thing, अगर आप exchange custody और fiat custody via bank अलग कर देते, so this would not have happened, because custody companies would be insured and they would be paying the insurance out of their pocket, and they would be collecting money from the users to do this custody. क्योंकि अभी exchanges act as the wallet, act as the custody, act as the trading venue, act as the streaming network. तो exchanges have a lot of power.
and this power sometimes they misuse, and sometimes they get hacked and they lose a lot of money and they go bankrupt. So everything should be segregated. That's my personal view. Hopefully that's how things will work out in crypto, because if that happens, then nobody will have a fear of buying. कि अगर आपको डर नहीं लगता है कि हाँ आप 10,000 रुपये डाल रहे हो कोई ऐप पे, फाइन, यू कैन लूज 10, 20, 30, 40%, but you will not lose the whole money. But if you're putting in some fake app, if the app gets hacked, whatever, you lose everything. That's a very bad thing, a bad experience also. Stock market में ऐसा नहीं होता है, then why it happens in crypto? Yeah, so NFT marketplace OpenSea has cut staff. I think 50% of the staff has been cut as per news. So they were not making money. Lot of that trading volume that they had is gone. Hopefully, lot of attraction will come to NFT again with NFT 2.0. जैसे DeFi आया था, then DeFi 2.0 came in. I think this is going to happen in NFT space as well. And then there are some, digital art collectibles like Bored Apes and Pudgy Penguins who are creating their own marketplaces because they don't want to give this fees to the NFT marketplace. And these are comparably bigger NFT platform, bigger NFT projects which have survived multiple bear runs. So yeah, Bored Ape has survived, I think, two beer runs. I think 2016 or 17 it was launched. So that's why NFT is losing that charm. और एक चीज और नहीं है कि NFT खरीदने के बाद you don't have a way to hedge your position. कि अगर NFT का प्राइस गिरता है, how will you hedge that? There's no way. And you cannot do a short against an NFT. There are a couple of platforms which are coming. One of them is NFTFN. Previously, it was called Believe.club. So there was another platform called Niftify. So Niftify, I think they did a rug pull. They took the users' money and they did not build anything. Yeah, full disclosure, I'm a very early stage investor in NFTFN. But I think NFTFN is building something very cool. कि वहाँ पे you can short NFTs. So basically, if you're buying an NFT in a marketplace and you short an NFT, so only thing you are losing is the premium, right? So if the price goes up, you still appreciate and you can square off your position and you can make profit on the other side. If price goes down, you can go all the way down and then you can close the position and you can get some money. So you still have your assets protected. So it's kind of an insurance product for buying NFTs. As simple as that. Krish, does it work like an option? Which has monthly expiry or anything else? It's not yet an option. I think they are just allowing you to do perpetuals. Like you can take positions long or short. Okay. That's good then. If they are allowing perpetual contract, that's good then. Yeah, but they have created a basket. So it's not like only one or two NFTs you can do that. So there's a basket called Supernova, which has some blue chip NFTs. So you can short or long on that basket. Good. I think this product will be very suited to work with, let's say, NFT marketplaces wherein you buy an NFT and then you short NFTs. So if market goes down, you're protected. If market goes up, you're protected. So yeah, the position will be hedged. Yeah, your position will be hedged. So it's a very good idea. Lastly, so yeah, all good things come to an end. So we are coming to an end to our podcast as well. And with this, we will just try to say that Indian police has arrested people in $300 million scam. So it's just a scam like any other scam. अब उसको crypto के नाम से चलाया जा रहा है. जैसे there's a Mahadev betting app scam in Madhya Pradesh where 500 crore was apparently given to some political party and some leaders to safeguard their interest. Yeah, but that money came from INR or fiat currency. तो इसके लिए हम लोग fiat को ban नहीं करते. Let's not ban INR for that, right? Because scam can happen in any form. So this is also a scam, not a fault of crypto. अब crypto के बारे में जिनको नहीं पता है, they are being made a scapegoat and put into scam. तो scam से बात कर रहे हैं कि अभी शौविक बता रहे थे कि काफी सारे scams अभी अनर्थ हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश से.
And I think in the last 2 weeks, I have seen more scams from Himachal Pradesh in India than any other Yes, place. yes, And yes. उसके पहले I think in September it was from Gujarat कि बहुत सारे scams हो रहे थे. So I think this scam cartel is moving from place to place and scamming people in particular cities or in particular places, or there are active promoters who are being told कि ये MLM scheme है. And I personally have some friends who put money in these kind of schemes कि मैंने crypto join किया है. I was like, crypto join किया है? मैंने Bitcoin join किया. it, Yeah, it I'm like, sounds like crypto school join or किया है? college. I'm like, yeah, so you never told me that you can join crypto. I'm like, अरे ये इसका क्या मतलब होता है? तो उसने मेरे को एक लिंक दिया कि मैंने इसमें 5,000 रुपया दिया है and this is how it will work. I'm like, bro, whenever you can take out the money and do not ask anybody to invest in that. क्योंकि अगर आप वो बोलते हो तो उसका पैसा भी डूबेगा और आपका रिलेशनशिप बर्बाद होगा. So I would say कि 5,000 रुपया आप अपना गवा दो rather than asking some people to put money there and losing the relationship. So this is just like any other scam. That's all I want to say. And with this we come to the close of our rather long podcast, and hopefully you guys learned something from it, got the context of the news. And we also have a good announcement. So we are going to launch our own centralized non-custodial swap with a exchange. So we will come and give more information about that. So here we will take responsibility for the INR on and off ramps. A2Z Crypto has got the registration done under the Indian FIU. So now we are one of the registered reporting entities and virtual digital asset exchange operators in India. With this, we come to an end of our podcast. And Sam, over to you for some more good news. So last week we already mentioned some part of it, Chris. Like me and Shravik just gave a disclaimer that we are coming up with something new, but we didn't reveal this much to the audience that hey, we are registered and everything. We're just like okay, we'll be announcing it soon. So we were waiting for you to come in and give the audience the great news. So along with it, we are also by trying to do some educational sessions, just like this live sessions into different colleges and in the physical world. So this weekend, like on this Saturday, we are going to IIT Kharagpur and we'll be delivering a 3 hours workshop session around crypto, blockchain, Web3, and the use cases basically. So that's the news that we wanted to share with everybody. That we're trying our best to spread the awareness and get as many people as possible to get into the Bitcoin or Web3 or crypto journey. So do support us by liking or sharing the news around. So if you have anybody from IIT Kharagpur, whoever is listening to it, please do request them to join the session. The registration link is already forwarded to all the students and people there. So thank you guys for joining in. And this is again a long form of content that we are creating here every week. So do support us by liking and sharing this news around, and do ask your questions in the comment section. And every week we'll come up with this kind of podcasts and live sessions so that you can ask the questions that will give you small nuggets of all the news and updates that's happening in the crypto space. Thank you all and have a nice day and keep on pumping. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye Thank you so bye, much. Bye everyone. bye.